गुड इवनिंग प्रिंस जी। नमस्ते जी। हम आवाज आ रही है सर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों को नमस्कार, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथियों, अब आज हम लोग मार्केट के संबंध में आपस में चर्चा करेंगे, और साथ में अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, लगभग जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। और इन्फ्लेशन के डाटा भी हमारे यूएस संबंधित और अपने देश के संबंधित भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो उसके बाद और रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें फ्यूचर में अब मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने रजत बोस सर को, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं और सेबी में रजिस्टर्ड भी हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की है। तो थोड़ी देर में वो भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो जब तक वो जुड़ते हैं तब तक हम लोग अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले 44 सेशन में हम लोगों ने एक अच्छा रनअप देखा। काफी समय तक लगातार हमको अप मूव भी देखने को मिला, और उसके बाद लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन हमने एक थोड़ा सा करेक्टिव मूड देखा। तो अब इस करेक्शन जो परसों का या फ्राइडे का जो भी हमारा डाउन साइड था, ये क्या हमारे लिए कुछ इंडिकेट करता है फर्दर करेक्शन के लिए, या केवल सिंपली उसको देखना चाहिए, इस संबंध में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और मैं इसमें अपना व्यू भी रखूंगा, साथ में जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं इनमें से प्रतीक जी हैं, काफी अच्छा है, इनको जानकारी है चार्ट के संबंध में। मोहिंदर जी हैं, इन लोगों को भी मैं इनवाइट करूंगा। जैसा कि हम अपने अन्य स्पेसेस में भी मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है, वीकली पिवोट के पॉइंट पर मैं चर्चा करता रहता हूँ, वीकली पिवोट और मंथली पिवोट की। तो मैंने पहले भी आप लोगों से लगातार ये चर्चा करता रहा कि जब भी मार्केट में करेक्शन आना होता है या कुछ नीचे का डाउन साइड बनने की संभावना होती है, तो सबसे पहला इंडिकेशन हमको वीकली पिवोट से मिलना शुरू होता है। क्या हम वीकली पिवोट के ऊपर बंद हुए हैं या नीचे? तो साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे वीक का एंड जब हो जाता है, या जिस दिन भी हम एंड पे जाते हैं, तो हम फिर उस वीक का एवरेज निकाल के और नेक्स्ट वीक की पिवोट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा फ्राइडे को वीक एंड हुआ, तो जो फ्राइडे पिछले वीक का हाई लो एंड क्लोज था, उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट वीक की पिवोट कैलकुलेट हो गई। अब उस पिवोट से नीचे हम बंद हुए, मतलब फ्राइडे के दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो पिवोट से नीचे हुई, जो हमारी अगले वीक के लिए बनी है, जिसकी वैल्यू इस समय जो मैंने कैलकुलेट करके निकाली, तो ये 17,820.47। तो दैट मीन 17,820 के नीचे मेरी क्लोजिंग भी हुई है। अब ये हमने जो क्लोजिंग दी वो वीकली नेक्स्ट वीक की वीकली पिवोट से नीचे किया है। हमारी जो वीकली कैंडल बनी है वो भी थोड़ी रिवर्सल कैंडल के जो संकेत होता है उसी प्रकार की रिवर्सल कैंडल बनी है। तो अब हमारे लिए एक नीचे के सपोर्ट आइडेंटिफाई करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नीचे कहाँ पर सपोर्ट लेते हैं। जो इतना लंबा रनअप हुआ है, ये रनअप, जैसा कि बीच बीच में चर्चा होती रहती थी, बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये रियल है या फेक है। तो हम लोग वहां पर कहते थे कि ये भाई अभी रियल है या फेक है, इसका डिसीजन करना है तो बहुत जल्दीबाजी होगी। तो अब इस समय भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी मैं ये नहीं कह सकता, या कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये जो हमारा अप ट्रेंड था ये हाल्ट हो गया, खत्म हो गया, या अब आगे नहीं चलेगा। बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हाल्ट तो हुआ है। और इस हाल्ट के बाद अब हम नीचे के सपोर्ट लेवल्स को वॉच करते रहेंगे। तो जो हमारे नीचे के सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, जैसे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है 17,648 का, एंड सेकेंड बन रहा है 17,539। अगर हम किसी भी वीक में सेकेंड सपोर्ट को नहीं ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम वहीं से रिवर्सल करके ऊपर को आने का प्रयास करेंगे, तो ये माना जा सकता है कि ये हल्का फुल्का करेक्शन है और वहां से हम फिर रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड सपोर्ट के नीचे क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, तब थोड़ा हमें काशस रहना पड़ेगा, और ये हो सकता है कि हमारा जो करेक्शन है या रिवर्सल है ये थोड़ा सा टाइम लेकर के नीचे की तरफ बढ़े। तो ऐसा मेरा मानना है। चूंकि जो रिजल्ट सीजन आया, रिजल्ट सीजन में हमने जो भी निफ्टी फिफ्टी के रिजल्ट देखे, तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं रहे हैं। काफी कंपनियों ने अगर 36 कंपनी ने अपनी सेल बढ़ा के दिखाई है या बढ़ी है उनकी, तो लेकिन उनमें से प्रॉफिट जो बढ़ के आया वो केवल 17 कंपनीज में आया। तो ये एक थोड़ा सा बहुत इंकरेजिंग नहीं रहा है। लेकिन जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है,
तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने के बाद मार्केट आगे की तरफ कुछ सोचे। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरा व्यू इस पर अभी स्लाइटली इसी प्रकार का है जो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं प्रतीक जी को इनवाइट करता हूँ। प्रतीक जी, आप आइए और अपने व्यू को रखिए। थोड़ा आप जरा एफ के डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। चलिए, मोहिंदर जी स्पीकर पे हैं, तो मोहिंदर जी, जब तक हम प्रतीक को इनवाइट करते हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। गुड इवनिंग वाजपेयी साहब, क्या बात रखनी है, क्या विषय क्या है? तो मैं तो इसलिए आया था, आपने कल बोला था रजत बोस आएंगे तो। हाँ हाँ, रजत बोस जी अभी आएंगे, थोड़ी देर में हम लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो हमने सोचा कुछ देर हम लोग भी चर्चा कर लें उसके पहले, जब तक वो आते हैं, क्योंकि फिर उनके आने के बाद थोड़ा सा उन्हीं की सुनने के पास हो जाएगी। तो इस बीच में कुछ अपने अपने व्यूज भी हम लोगों के आपस में शेयर हो जाएंगे। मैं और इन द मीन टाइम फिर मेरा व्यू जी। तो कोई चेंज नहीं, उस दिन जो शेयर किया था वही व्यू है, सेम है, डिस्कस दैट। नहीं, जैसे अब ऐसा है ना, अब देखिए मोहिंदर जी, वो बात सही है, बट जैसे कि अब काफी कुछ हमारा जितना भी रिजल्ट सीजन है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और हमारे निफ्टी फिफ्टी के सारे रिजल्ट भी आ गए ऑलमोस्ट, है ना। और इन्फ्लेशन के डाटा भी हम लोग सामने है। तो इन सब चीजों को मिला करके एक सर, ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है उसको थोड़ा सा अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। वाजपेयी साहब, मार्केट तो वैसे बिहेव कर ही नहीं रहा, इतनी हाई इन्फ्लेशन है, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब लोग रिजल्ट की बात करो, कोई कहता है क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो, कोई कह रहा है ईयर एंड ईयर देखो, तो पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड। बट नहीं, देखिए वो ऐसा है ना कि ये बात तो सही है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, हम लोग अपना भी कुछ अपना विवेक लगाएंगे, अपना भी नहीं, मैंने जो जो बोला था मैं वही एनालिसिस करते रिपीट हैं। करूंगा। मेरे को अभी जी भी जी मार्केट थोड़ा सा मंडे को कुछ लगता है होगा, मंडे ट्यूसडे को फिर थोड़ा सा हम जी। पुल बैक आएंगे, पर फिर होगा। तो जर्नी अभी ठीक है, बट वही है, लेवल्स टूटते जाएंगे नीचे को तो हम नीचे जाते जाएंगे, जो ऊपर को जाएंगे फिर हम ऊपर को जाते जाएंगे। बट करंटली ऊपर जाने के लिए हमें जो हाई, यानी कि जो पहला हाई मारा था हमने 65 वाला, 7965, वो एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है। ठीक है, उससे पहले 17851 जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी के लिए, अभी के लिए। और नीचे जो हमने 710 तोड़ा, तो हमें 300 200 पॉइंट का और डिप मिलेगा। अब उसके बाद फिर वो जो लेवल टूटते जाएंगे तो हम नीचे तक जाते जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, बट वो मंडे जो स्क्रीन पे दिखेगा वहां से डिसाइड हो जाएगा कि हम किस राह को जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो है वो, ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा हमने ले लिया था तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फ्राइडे को सब यही बोलेंगे। जो बुलिश, कोई बुलिश भी होगा तो आप उससे ये, और ये तो प्रॉफिट बुकिंग है, हम फिर ऊपर आ जाएंगे। तो एक्चुअल पिक्चर हमें मंडे ही क्लियर होएगी, तो उधर से डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ को जाना चाहता है। और काफी इवेंट्स हैं इस वीक में फ्रॉम एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी कोई डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता। मेरे लिए एक ही नंबर है, 15670 टिल September 21। उसको नहीं तोड़ेगा तो मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। जो उसको तोड़ देगा तो मेरे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे मार्केट को लेके। बट अभी उसके लिए 1 डेढ़ महीना पड़ा है, तो देखते हैं वो कब आता है। पर पहले अभी मंडे हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे। तो महेंद्र जी, नेक्स्ट वीक में एस्ट्रो के हिसाब से जो आपका व्यू है, उस जो भी आपकी घटनाएं होने वाली हैं, कुछ संक्षेप में उनके सर, बारे में अगर बताना हो संक्षेप जिस में समझे इतना तो ही है। बताइए। देखो, जो हमने लो मारा था 17833। ठीक है सर, जो हम इससे नीचे रहे, तो हम 16 सितंबर तक हम इससे नीचे ही रहेंगे। तो अभी उसका एक लो देखा है हमने। ठीक है, लगातार दो लो लगने चाहिए, अभी उसका एक ही लो बना है। वो बना है आपका 17,710 उसके बाद। ठीक है ना, तो ये लो बना है। और जो हाई की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे 7965 था, उसमें दो हाई लग गए हैं, 17968 और 17992। तो वो अपना काम कर चुका है। जो नीचे, अब ये देखना है कि नीचे के लो लगा के, पहला लो लग चुका है, दूसरा लो लग के और नीचे जाएंगे तो हम नीचे ही जाएंगे सर।
जो हम वहां से पुल बैक मिला तो हम ऊपर आने की पूरी चेष्टा करेंगे, बट वो अभी सर वो मंडे को ही पता लगेगा स्क्रीन पे। तो मेरे हिसाब से मैं बेरिश हूँ नेक्स्ट 2 डेज, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, फिर देन थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन फेस हो सकता है, बट मैं अगेन बेरिश हूँ 31 अगस्त से लेके 2 तक, क्योंकि वो क्लोजिंग भी रहेगी, साइड वे क्लोजिंग कराते हैं, कैसे कराते हैं यू नो दैट कि वो कैसे खेलते हैं। पर मुझे लगता है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा होगी रादर देन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में जो होना था हो गया, बट मेजर अब स्टॉक्स के अंदर कुछ होगा। अब वो देखो गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट करती है। मुझे ये भी है मेरा व्यू कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस महीने यानी कि 16 सितंबर तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव व्यू देना चाहिए, देगी। तो देखते हैं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये संक्रांति गवर्नमेंट की है, सूर्य की संक्रांति है। तो जी जी। वेयर दिस दिस राशि विल फेवर टू गवर्नमेंट। तो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। तो आप देखना, आप देखोगे तो 16 अगस्त से गवर्नमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आप चाहे, अब मैं आप ये कहते तो उनमें न्यूज है, चाहे बीएमएल को देख लो सर आप, चाहे आप कॉनकॉर को देख लो, जी। चाहे आप एससीआई को देखो, वट एवर स्टॉक गवर्नमेंट पीएससी स्टॉक्स दे आर मूविंग गुड। तो आईएससीटीसी को ही देख लो सर, एक दिन में 10% रिटर्न दे दिया है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। देर इज जी वो जी जी उन्होंने न्यूज का खंडन भी कर दिया, पर ठीक है, लोगों ने चला दिया उसको। वाजपेयी जी, प्रतीक जी। भी बता रहे हैं और कुछ लोग और भी बता रहे हैं शायद वॉइस का इशू है, तो आप देख लीजिए। हाँ, तो ऐसा करते प्रिंस सर शायद दोबारा। आई थिंक, नहीं नहीं, वाजपेयी सर शायद आई थिंक अभी वॉइस की ब्रेक नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में था, तो एक बार और कंफर्म कर लो। हाँ, तो जरा जितने लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा अगर अपने उस पर हाथ आप उठा करके बता आप देंगे तो अच्छा आप रहेगा। वाजपेयी सर, आप एक देखिए कि प्ले स्टोर पे जाके देखिए आपका ट्विटर का अपडेशन पेंडिंग तो नहीं है। नहीं, नहीं, महेंद्र सर अब ब्रेक नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में तो ब्रेक उस टाइम था, तो मैं चला तो गया मेरे था, को भी उस टाइम ब्रेक। मैं चला गया था, क्योंकि हाँ, मैं वापिस आया हूँ, तो अभी एक बार और लोगों से कंफर्म। संजुल सर आप बता दीजिए, ब्रेकिंग थोड़ी है और वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। ठीक नहीं, है ब्रेक संजुल जी, तो ब्रेक सही नहीं हो रही बात है, है। अब ब्रेक नहीं हो रही है। अब अब नहीं हो रही ना, बिल्कुल। चलिए, ठीक। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ ना, अगर दोबारा रीस्टार्ट करना हो तो मैं अभी रीस्टार्ट कर लूँ, या फिर नहीं तो रजत बोसी के आने के नहीं बाद नहीं, फिर ना बिल्कुल ब्रेक हो बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छा। आवाज आ रही है अभी तो। मोहिंदर सर अभी आ की, रही है। प्रतीक की, आपकी, सबकी बिल्कुल करेक्ट है आवाज। चलिए, बहुत बहुत थैंक स्टार्टिंग में इश्यू था शुरू में, तब मैं 3 बार मैं जब बाहर जाके वापस आया और मैंने मैसेज भी किया कि वो ब्रेक हो रही है, बट अभी वो रजत सर के चक्कर में ही बोला था कि वो आए हैं, फिर अच्छा नहीं लगता ब्रेक करे अपन। नहीं नहीं ठीक है, आवाज पहले मेरे को भी ब्रेक हो रही थी, तो उसके बाद तो ठीक है, पहले वाजपेयी साहब की भी ब्रेक हो रही थी वॉइस। तो लेट्स सी वाजपेयी साहब की क्या होगा, ये मंडे स्क्रीन डिसाइड करेगी। कि देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि तब भी मैंने बोला था कॉशियस, अभी भी मैं कहूँगा कॉशियस। देखो, जिसने शॉर्ट करना है उसका सिंपल स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,833, जो हमने लॉ लगाया था 16 अगस्त को। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। और जिसको लॉन्ग करना है वो जब तक 17,900 यानी कि 17,965 यानी कि 17,965 जब तक नहीं तोड़ेगा, वहां से लॉन्ग करे, वो उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और जो खेलते हैं, जो लंबा खेलना चाहते हैं, चेष्टा रखते हैं, पर उनको अपना स्टिक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से खेलिए। तो मेरा तो ये व्यू है वाजपेयी साहब। मैं थोड़ा ये है कि डाउन साइड है, पर इतना नहीं है कि मैं कहूँ कि 12,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दे द लेवल्स विच निफ्टी नीड टू ब्रेक। निफ्टी नीड टू ब्रेक फर्स्टली 7110, जहां से इसने सपोर्ट लिया है वो ब्रेक करना जरूरी है। वो ब्रेक करेगा तो वी विल लुक आफ्टर 556। जो 556 ब्रेक करेगा, वी विल गो फॉर अ 350, then we go for a 125, then we go for a 16850, but those level need to be break first। ऐसे नहीं कि आ जाएगा। और अपर एंड क्लियर कट है मेरे लिए 17851। वो टूटेगा तो मैं कुछ सोचूंगा बुलिश होने की, जब तक वो नहीं टूटेगा मैं बिल्कुल बुलिश नहीं होऊंगा निफ्टी को लेके। नहीं, थैंक यू महेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा वेडनेसडे थर्सडे की भी इवनिंग को हम लोग जब एक स्पेस में थे तो वहां पर भी आपने क्लियरली फ्राइडे के लिए बताया था, और काफी वो आपका एक्यूरेट निकला। तो आगे के लिए भी आपकी इन चीजों को मैं समझता हूँ लिसनर्स अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोई चीज फाइनल तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी है कि एक अनुमान है, जो अनुमान रखे जा रहे हैं
और अगर वो सही निकलते हैं तो आप उसको देखते हुए अपने निर्णय ले सकते हैं। तो प्रतीक जी, आप थोड़ा सा डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपना व्यू शेयर करें प्लीज। हेलो एवरीवन। सर, पहली बात तो मैं मंडे के फर्स्ट हाफ तो मुझे नेगेटिव के चांसेस हाई लगते हैं। सेकंड हाफ में अगर वो लो को होल्ड करता है तो फिर वैसे मतलब मैं फर्स्ट हाफ के लिए हूँ। सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि पहला डिप इन जनरल बाय होता है। अब वो डिप कितना भी डीप हो सकता है, वो एक डिफरेंट थिंग है। तो वो जैसे मार्केट बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप डेटा के हिसाब से लेवल में, तो मैं मार्केट प्रोफाइल देखता हूँ निफ्टी में, तो उसके लिए तो पहला लेवल तो जो अभी अपन जहाँ अभी जो कल का लो था वो, और उसके बाद जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 1755 के अराउंड। उसके नीचे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 17421, और उसके नीचे 17225। ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और ऊपर में तो मेरे हिसाब से जो हाई लगना चाहिए वो 182245 के अराउंड, जहाँ पे मतलब मार्केट प्रोफाइल इन सेंस कि वहाँ पे बड़ी वॉल्यूम से ऑर्डर आए थे। तो इतनी जल्दी ये लेवल्स टूटते भी नहीं है और बनते भी नहीं है। तो इन लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। और मैं छोटी छोटी ट्रेड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वो लंबे व्यू की निफ्टी 21,000 होगा कि 16,000, वो मैं नहीं। स्टेप बाय स्टेप ये है। और मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिकली मार्केट रहना चाहिए, और थोड़े से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़्यादा फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि अभी महेंद्र सर ने भी बोला कि सन वाली साइकिल के लिए तो सन का इन सेक्टर पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी इन स्टॉक्स में आ रही है एक साथ। तो इस सेक्टर को फोकस में रखना चाहिए। और जो प्रतीक ने बोला ना अभी 18 समथिंग, वो हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट है, यानी कि वहां पे हमारी पावर टेस्ट होगी कि निफ्टी निफ्टी की पावर टेस्ट होगी कि वो ऊपर जाना चाहता है या वापस अपनी राह पकड़ना चाहता है नीचे की। तो वो लेवल बहुत क्रूशियल है निफ्टी को ऑल टाइम हाई या ऊपर जाने के लिए। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब तक वो नहीं टूटेगा ऊपर की राह के बारे में सोचना ही गलत है मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है। वो वो एक्चुअल में 9 का गैन स्क्वायर नंबर है। तो उसको ब्रेक मार्केट ने ना एक बार गैप अप में करा था, स्क्रीन पे आया नहीं था। सेकंड हाँ, टाइम जब आया था जब वो उस लेवल से डायरेक्टली नीचे आ गया था। तो वो उस लेवल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नियर अबाउट वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपर साइड में। बट अभी एग्रेसिवली शॉर्ट स्क्रीन देख के सेकेंड हाफ में करना, क्योंकि लोगों में फोमो भी बहुत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। तो उस वजह से हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस आ जाए अपन को सेकेंड हाफ में कल मंडे को। तो स्क्रीन देख के करना, एग्रेसिवली तेजी और एग्रेसिवली मंदी स्क्रीन के अकॉर्डिंग करना। जो हमारा था व्यू की या तो 20th को प्रेशर डेट आ रही थी, उसकी वजह से या तो 19 पे इम्पैक्ट पड़ेगा या 22 पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 19 को आ ही गया। महेंद्र सर और मैंने दोनों ने क्लियर बोला था कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे कॉशंस रहना अब, क्योंकि जो पूरी साइकिल थी वो एक कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट साइकिल में अपन ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। अब इस साइकिल में क्या होगा वो 1-2 दिन मैच्योर होगी साइकिल, देन समझ में आएगा। प्रिंस सर, ऑडियो आ रहा है ना? हाँ, हाँ, आ हाँ रहा है, पूरा प्रतीक आ आ रहा रहा है। है। जी अच्छा, तो विजय काला जी, आप अनम्यूट करके साथ में अपनी बात रखें प्लीज। नहीं नहीं, वो सर ऑडियो नहीं आ रहा था, मैं तो तब स्पीकर में आ गया। तो अभी तो देखते हैं, मतलब ये कोई नई चीजें नहीं हो रही है। सब बहुत बहुत बार हो चुका है ये पहले। तो देखते हैं अब आगे। जैसे मैं सर मैक्रो ज्यादा देखता हूँ, और मेरे चलते ही वही है ज्यादा बढ़िया। जैसे ऐसा है नेक्स्ट वीक। विजय जी, हर व्यक्ति माइक्रो देखता है, ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रो ना देखता हो। विदाउट माइक्रो के कोई कारोबार ही नहीं करता। बट ये है ना कि माइक्रो के साथ में आदमी थोड़ा सा चार्ट भी जो देखता है, वो चार्ट को भी देख करके उसके हिसाब से डिसीजन ले लेता है। क्योंकि अब माइक्रो में अगर आप, जैसा आपने अभी मैंने देखिए साथ में डिस्कस किया था कि हमारी 50 कंपनीज में से केवल 17 कंपनीज ने ही नेट प्रॉफिट की बढ़ोतरी दिखाई है अपनी, है ना। इसके बावजूद जिनके नुकसान आए वो भी बढ़ गए से, तो क्या करिएगा आप। अब बीपीसीएल इतना भयंकर लॉस दिखाने के बाद भी वो 320 से 355 रुपए हो गया। सर तो मैं इसीलिए तो कहते हैं मैनिपुलेशन। नहीं, देखिए फिर वही बात यहाँ पर यार, मैनिपुलेशन है या क्या है। ये तो मार्केट है भैया, मार्केट को आपको देख के समझ करना। ये मैनिपुलेशन कह कर करके ना केवल हम अपना नुकसान करेंगे। हमें उसको चार्ट के बेसिस पर देख करके अपने आप को सेव करना है। मैनिपुलेशन है या फिर इसके बारे में ऐसे तो भी एक दिन उन्होंने कहा फर्जी है सब। तो ये तो बड़े अजीब शब्द उसी ही रहते हैं कहना कि मैनिपुलेशन हो रहा है, या कि भाई जो है उसमें रियल प्राइस नहीं था उसका,
या असली प्राइस पे गया या नकली प्राइस पे गया, तो हमेशा होगा। कभी हाई पे होगा तो वो असली प्राइस नहीं होगा, बॉटम पे होगा तो वहां भी असली प्राइस नहीं होगा। प्राइस तो अब हमेशा मार्केट फंड वाजपेयी करता सर, है। वाजपेयी सर, मार्केट सबको हमेशा सरप्राइज ही करती है। अब पूरे ट्विटर पे हमेशा, खैर जब से ये रैली स्टार्ट हुई थी, शायद 8 दिन लगातार निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ था। बीच में एक रेड छोड़ के तो लगातार अराउंड 13-14 दिन निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ था। तो सब ये कह रहे थे कि गैप डाउन ही इसको, रैली को खत्म कर सकता है, या जो भी है, या गैप डाउन होगा मार्केट तभी नीचे जाएगा। फ्राइडे क्या हुआ? गैप अप खुले, हमने बढ़िया ऊपर कंसोलिडेट करा, बड़े प्लेयर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई, कॉल राइटिंग करी, और फिर वहां से गिरे हम। नहीं तो कॉल राइटिंग खाली परसों ही थोड़ी हुई, कॉल राइटिंग तो आए दिन होती रहती है भाई। कॉल राइटिंग हो रही है, गिर भी रहा है फिर उठ रहा है, तो हो रहा है ना, दोनों चीजें होती रहती हैं। नहीं नहीं सर, कॉल कल के बारे में डेली देखता हूँ, कॉल और पुट राइटिंग को कैसे चेंज कर देता है, चेंज हो जाती है, मतलब 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। कि उसको आप नहीं जज कर सकते कि कॉल राइटिंग हो गई है तो बस यही होगा, या पुट राइटिंग हो गई है तो बस यही होगा। अब सर एफआईएस का डेटा भी अभी 1-2 दिन से ही अपना वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं बस एग्रेसिव, उससे पहले तो आपको वो भी तो लॉन्ग ही थे। 2 दिन से स्टार्ट हुई, 2 दिन से आप देख लीजिए मार्केट में धीरे धीरे जो है नरमी आनी बस शुरू हो गई। आप देख लो, यही बड़े प्लेयर्स हैं जो 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 चला रहे हैं, हम लोग तो क्या हैं। बड़े प्लेयर अपने आप नहीं चला रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तब बड़े प्लेयर काम कर पा रहे हैं। बड़े प्लेयर किसको खरीदेंगे, किसको बेचेंगे? अगर छोटा प्लेयर नहीं होगा तो बड़ा प्लेयर क्या कर लेगा फिर? बस ये है कि छोटे प्लेयर को भी थोड़ा अपने आप को इक्विप करके रहना है। चलिए खैर, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, कंप्लीट किया, थैंक यू। हाँ प्रतीक जी बताएं। सर कालरा सर बोल रहे हैं ना गैप डाउन के लिए, तो सर कालरा सर आप हमने तो हमारे हर जगह महेंद्र सर मैंने क्लियरली बोला था, जो व्यू है वो सिर्फ 19 तारीख तक है। 19 तारीख को क्लियर बोला था कि लॉन्ग में मत रहना, लॉन्ग में मत रहना, लॉन्ग में मत रहना, सर सुबह हम से तो रहते क्लियर। ही शॉर्ट हैं। अरे तो आप कुछ भी रहते हो, हम तो इन जनरल टर्म्स में बता रहे हैं ना, आपको स्पेशली थोड़ी बताने आएंगे कि ये होता है और वो होता है। इन जनरल टर्म्स में बता रहे हैं हम आपको कि इन जनरल में हमने क्लियर बोला था कि प्रेशर डेट है, साइकिल में इम्पैक्ट पड़ेगा। संजुल जी आप अनम्यूट करके प्लीज आप अपना व्यू दें प्लीज। Thank you, Vajpayee ji. I more or less agree with मोहिंदर सर एंड प्रतीक जी। मेरे को एक बार फील ये है कि मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन खोल के वापस से मगर खींच सकते हैं ऊपर मार्केट को। एक बार ये नंबर 18200 के आसपास का एक बार फोमो फीलिंग ख़त्म करने के लिए, या शॉर्ट सेलर्स को, बिग बाय सेलर्स को रिमूव करने के लिए एक बार ऊपर ले आ सकते हैं। बट ये 18200 क्रॉस करने की स्थिति तो वो तो स्क्रीन ही बताएगी या मार्केट ही बताएगा, बट वो नहीं लगती है अभी के समय में। और एक बार ये 18,200 तक पहुंचता है, उसके बाद से मैं मेजर थोड़ा सा नीचे डाउन साइड देखता हूँ, जो कि मैं 16,200 16,000 तक भी लेवल भी देखता हूँ। तो ये अभी मेरा ब्रॉडली आउटलुक है। बट एक बार ये वापस ऊपर जाने की हिम्मत रखता है, और अभी पूरा चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। तो एक बार 18,000 से ऊपर एक बार दिखाना चाहिए मार्केट को स्क्रीन पे। ये मेरा ब्रॉड आउटलुक है। बाकी तो पोजीशनिंग बिल्ट अभी इतनी जल्दी होती भी नहीं है कि एक दिन में फ्राइडे को गेम हुआ कि 965 खोला या 900 जो भी खोला और ऊपर रखा और उसके बाद नीचे तक लेके आ गए। तो एक दिन में अगर हमारी तरह मतलब स्मॉल स्कैल्पिंग करते नहीं है कोई, या बड़े ट्रेडर्स जो हैं या बड़े लोग, बड़ी पोजीशनिंग बनाने वाले लोग हैं, थोड़ा पोजीशनिंग खेलते हैं तो एक दिन में पूरा नहीं सेट करते हैं। एक बार अभी नीचे लेके आए हैं, फोमो फीलिंग है, फिर लोग बाय आउट करेंगे, अरे ये सब खत्म हो गया, स्मॉल करेक्शन हो गया, फिर 900 भी क्रॉस कर लेंगे, 970 का जो भी लेवल है वो भी क्रॉस कर लेंगे, 18,000 भी स्क्रीन पे दिखेगा, सबको बाई 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 दिखने लगेगा। जब तक पूरा मार्केट बाई 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 नहीं दिखाए देखेगा देखेगा तब तक तो ये इतनी आसानी से गिर नहीं सकता। बट इन केस अगर ये गिरा, इन केस अगर ये गिरा, और ये मेरा थिंकिंग है ये नहीं 18,200 नहीं आया, तो जो Sanjul, लेवल sorry to come between. We have Rajat Bose sir with us. Sir, we have sent you a request. If you have received, kindly accept. So I'm just finishing in one minute. So अगर तो ये नहीं हुआ तो हमें 550 का लेवल दिखना चाहिए, और 17,200 का लेवल दिखना चाहिए। ये डाउन साइड में देखता हूँ। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। रजत बस बोस बात सर हम लोगों के बीच में ज्वाइन कर लिए हैं, तो हम सब लोग रजत बोस जी का स्वागत करते हैं। सर रजत बोस जी, मैंने आपको सर इनविटेशन के लिए भेजा है,
काइंडली एक्सेप्ट कर लें, जिससे कि स्पीकर मोड में आकर और हम लोगों को बस मैं एक मार्गदर्शन चीज करें। वाजपेयी जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप जी बस एक चीज का नजर रखिएगा सब लोग कि 3 बजे पे, ठीक है, वो पहले 2 बजे बेचने आते थे, एल्गो 2 बजे लगते थे। अब पीछे एक हफ्ता सवा जो भी है 10 दिन एल्गो लगा है 3 बजे का। वो जी नहीं जी लगा तो वो डायरेक्शन देगा आपको कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। उस दिन उन्होंने 2:30 बजे कोशिश की थी पर उनको स्ट्रेंथ नहीं मिली, तो उन्होंने 3 बजे नहीं लगाया, ठीक है, जिससे मार्केट नीचे ही गया। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप भी इसको ट्रैक करना है तो कर लेना। 3 बजे थैंक यू इज वेरी। ओके ओके, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, रजत सर। Yeah, good evening. Can you hear me? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी लोग सर आपका स्वागत करते हैं। जी सर, हमको आवाज आ रही है सर, प्लीज। तो सर अब आप हम You can लोगों को hear me, थोड़ा na? अपने। जी सर जी। I suppose everybody is here. Everybody can listen to me, right? Everybody can hear my voice. Yeah, sir, loud and clear. Please go ahead. Okay. Well, I mean, to start with, what do I have to say? I mean, it's the market outlook of this week or something. What is the Sir, question? first of all, we would earnestly request you to, I mean, give a view of where your journey started and how you Oh, graduated over a period of time and what we can learn from that experience. all right. I mean, if you can't hear me properly, just tell me, because that was the problem to begin with. My journey started in late 1991. I wasn't at all associated with stock market. I was a PhD scholar at Jagatpur University, Kolkata. But for some reason, uh, uh, the job opportunities at that point of time in academics had not been that good, and that's the reason why I decided to shift away. And I had a chartered accountant friend of mine uh, who was very helpful. He only told me, the thing is that after I sort of his advice to me at that point of time was that if I'm interested in venturing into the stock market, then I might do well, because by that time, that was late 1991. What I found was that uh, market was moving up, and it was as if you join the stock market, you can make a lot of money. But see, I was coming from academia, so I was not convinced about that. I said that without really studying. And by the way, uh, I wasn't from the commerce, or for that matter, say engineering section. And I was completely, I was actually a, a comparative literature researcher, although we had to study economic history and all that. That we used to do, but I wasn't exactly a student of commerce or business or stock market. So it was a pretty new thing to me, but somehow I had an interest. So studying. I started studying, and I began my journey as a fundamental analyst. I mean, I studied myself, and then technicals I never used to do. Technicals, I started picking it up because I found that sometimes fundamentals was not really working, and that's why I had to take to technicals. That in the short run, in fact, that was giving better this thing. Uh, my connection with the media happened through Economic Times. I used to write on a regular basis in Economic Times Calcutta. There was a stock watch page on Saturdays, and the best article that I could produce when these two, Fisher Black and uh, mm, Robert Martin, they got the Nobel Prize. Uh, uh, I mean, around that time, I wrote an article on that, and that was highly praised and all that. And a lot of people have actually told me that, I mean, how could you possibly write this article? I said,
I mean, if you want to pick up something, and I'm totally self-taught. I have attended some seminar courses in that time, Dad in Bombay. Hmm. uh, uh, 5 days or sometimes there was another course that was for say slightly more than 5 days, I think 7 days or something. It was the then UTI Institute of Capital Markets, now that is known as Capital Market Institute. Uh, that was basically the 90s when it was a backbreaking market. And one thing I can vouch for to you people is that uh, Morgan Housel in his book Psychology of Money said that you develop your outlook on life, outlook on money in the milieu that you have actually grown up. So 80s or 90s, 80s I was in my 20s and 90s I was in my 30s. That point of time, what we found is that the Indian economy was just about opening up, but we had after 1994 we had a 5-year backbreaking spell. That's why initially believing in buy and hold and stuff like that, we never used to, we could not indulge in that luxury, and only tech stocks used to move and nothing else. So that was the beginning of the journey. And then a friend of mine, he's dead now. He was also in CNBC, Matthew Iso. He was from Kolkata. uh, Matthew recommended me to CNBC. CNBC that time hasn't yet started its broadcasting. It started on 7th of December 1999, and I think 9th or 11th of uh, December I appeared for the first time. That was it. And initially, there, I mean, people came to know me because you won't like it, maybe. That is, I was classified as a rank bear. Why? Because I never used to believe the tech bull run in 2000. And I actually, my, my rendezvous with fame came through, the uh, tech meltdown. I actually predicted the tech meltdown much earlier than uh, any analyst in India, and that was the reason why Senthil Chengalparayan once said. I mean, I don't know whether you know him or not. He was Udayan senior at that point of time. At that time, Raghav Bell, Senthil Chengalparayan, and Udayan used to sit in the morning, and we used to fake it in the sense that we were actually giving interview 20 minutes earlier than when people used to hear CNBC. That time the transmission was actually done from Singapore, so there was a 20-minute lag. At that time, one Senthil remarked that if Rajat is bullish, then it must be a great thing, that the sun must be blazing or something. Because I used to always say that the kind of valuation, because once on CNBC I said that Infosys that time was trading at 300 plus PE, and it was I only said that when you I repeated a statement of Warren Buffett at that point of time on our TV channels. That is, at that point of time CNBC was only English that was available. I said that if you pay too high a price for a stock, you actually sacrifice several years of growth down the road, and it is just a matter of time before the cookie crumbles. And the cookie did crumble, not in February as I was expecting, February 2020, 22 February 2000, but it did crumble in the month of March. And that was it. That was the reason why I was given a prominence at that point of time in CNBC, because I was so right and all that. Then it was, I mean,
from then on, more or less, it was the same situation. But see, I told you about my heydays when I was proved right, uh, and I used to challenge fund managers when they used to come and make presentations in Kolkata or something. But you know, I missed, and I mean the thing that I must mention here is that actually I studied economic history in deep detail. That is fine, but I never knew that there could be a thing called quantitative easing. I never knew that monetary expansion can be done in such a manner by the central banks, which has never happened in the past. So I actually could hold on to some good stocks, but mostly I used to get out of the positions after booking, say, good profits, but not. And they could have been multi-baggers, up to say 2008, because I sold off my portfolio mostly, except for stocks like Whirlpool and all. A few stocks I kept on, but I got out middle of 2007 when the rally continued for another 6 months, and I could have made a lot of money, but I could never believe it. That's why my problem has always been that although I'm a card carrying technical analyst, CNBC has made me a card carrying technical analyst, but I began as a fundamental analyst, and my first love is fundamental analysis and not exactly technicals. But I can tell you, technicals has taught me one hell of a lot. I have been bragging for quite some time. I think the bio is a bit stretched. Now, please shoot your questions. Yeah, sir. Before moving to other speakers, I have one more question for you. So, like initially, when we enter market, we are clueless about a hell lot of things. So we don't know what exactly we need to see, and over a period of time, we graduate and find out our niche that this could be our circle of competence, and so. So, how much time, or maybe how many cycles you think to a minimum are required to know oneself and the understanding the nuances of the market, sir? The voice was breaking. Could you just briefly repeat it? Okay. Is it better now, sir? Now I can hear again. Okay. Yeah, sir. So I was asking, like, when we enter market, so we are clueless what to do and what not to do. So over a period of time, we start to learn new things, and gradually we learn so many things. So how many years, or maybe how many market cycles you think are a minimum required for a person to acquire a basic sense of market? If you tell me basic sense of market, then I would say that according to Peter Lynch said this in one of his seminal books, that is One Upon Wall Street or Beating the Street. I think it is the first one in which he said that a person who is actually in the market gets seasoned only by seeing two bull markets and two bear markets. But the problem that we have faced, especially those who have come to the market in this century, is that the first 20 years, barring a small period of time between 2008 and 2009, or say 2013, 2014, you haven't seen any bear market. So if you ask me, and if you tell me that we are there in the market for the last 20 years, I would say that you have seen bear market for maybe at the most 24 to 30 months or so, or nothing more than that. That really doesn't season you for a bear market. The point is, why this happened? Why did this happen? First, it was 2003 to 2007 monetary expansion. Second, after 2013, when there was a talk of quantitative easing, that is a taper tantrum, US Fed said that they might actually withdraw the money that they have pumped in, but then there had been problems in 2013-14. And what happened between 2014 and 2019, central banks of the world have unleashed 16 trillion dollars, and 2019, or rather from 2020 April
to say October 2021, during this 19 months or so, what we saw is that another $9 trillion have been unleashed into the world monetary system. So this being this, $25 trillion of money that was circulating in the world monetary system, this is actually a public sector bars breaking. You got the sound, that was it. Uh, point Coming back to what I was telling you, that for your seasoning, I think you will get seasoned in this decade. In this decade, you are going to going to get seasoned, but do not be afraid. Do not be afraid that if there were to be a durable bear market kind of a thing, if that were to happen, if at all that happens, because these days the central banks might again do the same thing, although inflation is going up. Point is this, that if you fortify yourself with the knowledge of economic and financial history, you will see a lot of things are actually getting repeated here. I mean, this kind of a thing. And the book that I would suggest all of you to read is The Changing World Order by Ray Dalio. Ray Dalio's book is easily available. You can even, some of you who do not want to purchase the book can actually go to his site and download the PDF copy. He is distributing it free of cost. Today only I was listening to him, and he said that he wouldn't have given all this knowledge away just like that in a book or on television or through PDF, because he is 72, and mind you, this billionaire whose net worth is $20 billion, he lost his only son in an accident. So you can understand that he is actually trying to do good to the humanity. He has been a philanthropist for a long period of time, but he is now doing it in a big way. Please get a copy of that, and then on Twitter, if required, I'll give a list of books on financial or market history. You should be reading. You should have, by now, what you should have done is that read the histories post-war, that is post 1945 and pre-war. And one thing that I would like to tell you is this: I wish I read all of those histories in by the time it was 2000. But at that point of time, there was no Amazon.com or Amazon.in or something. At that point of time, it was very difficult getting a foreign book here. I mean, the publishers would not even I wanted to pay import charges, they did not bring the book because it is not viable for them to do that kind of a transaction. So, but nowadays that is available. Nowadays the internet is there. Read. If you want to shorten your learning curve, if I tell you that you have not seen a proper bear market, if you have come in the market after the year 2002 or so, then you may feel bad that 20 years we are there in the market and this guy is saying that you haven't been seasoned. The point is that we haven't seen a true bear market. When that happens, you will be much more fortified if you study financial history. And I'll tell you, I'll quote a person called Richard Bernstein. He joined as an analyst after passing his MBA in 1969 from Columbia Business School. And from there, he went on to become the director of research. He retired in the late 90s, I think, from Merrill Lynch. You know what he said? He said that when I joined Merrill Lynch, me and my contemporaries then used to think mathematical models would give us, because that time Eugene Fama and others got Nobel Prize for this efficient market theory and stuff like that. So everybody was keen on developing models. Even today, when I teach at IIM Calcutta students, I find that they are always asking, sir, can there be a model to actually predict the price excursion or when it will turn or something? I said, I wish I knew it. But by the way, nobody knows about it, because if
if such a thing could have been there, then the option markets wouldn't simply have been there. That's the point. Point is that Richard Bernstein, in his speech, the retirement speech, he said, I wish I studied economic and financial history, market history, much more than those mathematical formulas and models, because they actually teach you far more than, because you see one thing, you have to understand one thing, that finance might be a mathematical science. To a certain extent, it is definitely highly mathematical. But if you ask me, what about investments? What about trading? This is more behavioral, 90% behavioral, or even more, 95% behavioral, and rest maybe mathematical, economic, whatever you call it. So that's the reason I suggest that, because I'll tell you one small thing now. Today, in 1991, when we began our journey as an emerging market economy, where the first true economic reform started happening. From then on, we are still an emerging economy. We would become a $5 trillion economy soon, maybe. I don't know whether it will be 2027 or 2030, or I don't know when exactly, because I don't think the growth rate will be 7-8% in any, I mean, within the foreseeable future. I don't think we will achieve that growth rate. It will be 5-6. We should be very happy with that in the economic growth. So over a period of time, we will continue to we will become an advanced economy. But all emerging economies actually spent about 5 to 6 decades as an emerging economy. And US, by the way, today's most advanced market, was an emerging market up till the end of the Second World War. So right from the last decade of the 19th century till about 1945, or even you can say up to 1950, US was more of an emerging market. That time, the European markets were the advanced markets. But we would also become an advanced market. And being an emerging economy, whatever happens, maybe we will see lower growth percentages and all that, but we will continue to grow. So there is every possibility that we would, if we actually choose good stocks and we carry on with it, we would make quite a good bit of money, but may not be in the short run, may not be in 1 or 2 years, but long-term investing. And you might wonder, or you might get a bit surprised to know that in my heart of hearts, I'm actually a strong Benjamin Graham follower, that I believe in margin of safety. So throughout this last 63 days of upswing, I've actually not purchased. I've actually sold a part of my portfolio, and I'm willing to stay put. That when I get my price, then only I will buy, and I'm not going to buy right now. And one thing is there, I'm not trying to bias you about that market will be bearish or something. No, not that. My point is this, that unless I can ensure that I have my margin of safety, I'm not going to spend a single penny in the market. And let me just give you a small bit of suggestion. When you look at 70, 80, 100 PE, just think about it. When somebody justifies that FY23 PE is 80 and FY26 will be 25 or 30, I would say that first thing is that if you say FY25, then you are actually sacrificing the growth in between, now and in March 2025. My take is this, that rather than that, look at the current PE and think, what is PE? That is price earnings ratio. That means you are actually buying 1 rupee of profit
by paying 80 rupees for the stock. So if the stock is, say, trading at 12p or 15p, trading at 12 rupees per share EPS, that means on 80p you are paying 960. 960, this is the meaning of 80p. So be wary of that. That's what my suggestion. But do not, there are phases when all these prudent considerations about valuation, they are thrown into the winds. The biggest period for such kind of a thing that happened was between March 2020 and October 2021. During this period, the world central banks, in my opinion, no particular individual is a big bull. The big bulls are actually the central banks of the world. If they decide to play ball, you don't have any worry. And if they really go for quantitative tightening, then God help us. Right, sir. Sir, I have a quick question in between. Then we have so many speakers, Sharad sir, and many are waiting. So I'll be coming to that. Sir, one question is on Cipla. So Sajal sir has asked he want to SIP in Cipla, lekin correct nahi ho raha hai. So he want to know your views on that, sir. Again, there is a bit of break in. What was the stock that you mentioned? Cipla, sir. Cipla. Okay. Just a sec. Let me load the chart. My memory is pretty poor these days, so I don't remember charts so well. Well, let's look at the Cipla chart. I'm actually what I'm now doing is I'm looking at this on a weekly basis. The weekly chart I've loaded. What I find is that yes, after a heady run for Cipla up to a level of 997, and that was late January 2021. After that, it has become a range-bound counter, and it posted a higher high, fooling us into thinking that now a fresh upswing about to happen. That happened on the high that was posted on 1083. But if you ask me, I would say that this is still a range-bound counter, and it is unlikely to move up without the support of the market. There are some stocks that actually trade contrary to market movements. Even if the market is weak, they move up. Cipla is unlikely to do so. Unless it takes out 1100 decisively, no major move is to be expected. On the other hand, if it were to fall below the 900 mark, then it can actually retest levels around 800. So if you go for an SIP, take it from me, the best option is the index. Take it from me, best option is the index, because over a period of 10, 15, 20 years, you can even count, it will not be even 100 fund managers in the world who have actually beaten the index. So it is much better to be in the index if you want to do an SIP. That's it. That is my suggestion. But Cipla, for any long-term investor, fine. But certain things happen, Now, if there is a withdrawal of monetary support by the world central banks, including our central bank, that is the RBI, what will happen is that a number of stocks that have moved up, if you read Vitally Katzenelson's book of Making Money in the little book on sideways markets, you will understand that what we call PE compression, that is likely to happen. You may not see the stock falling, but you will see that the earnings are going up, but the stock price is not moving up in tandem. That is because it is already richly valued. That kind of a scenario we are about to enter. For some good stocks, that will happen because market may not punish them so much. And for mid cap and a lot of stocks, I have a very simple criteria. I look at the figure of free cash flow. How I arrive at that? The operating profit minus the capex
minus the capex incurred in a particular year, you get the free cash flow. Now, if you look at any company's last 10 years of free cash flow figures, you will be surprised that a number of companies who are actually otherwise known to be fundamentally very sound, but on free cash flow parameters, they are not that great. But some companies like, say, Asian Paints or ITC or Hindustan Lever, their price divided by free cash flow, that is how much uh, I mean, what multiple you are giving to the free cash flow per share. Uh, that ratio and the PE ratio, they are more or less similar. Like for instance, ITC's free cash flow per share will be currently now somewhere between 27, 28, and maybe the PE is around 30 or so. That kind of a thing. But in a number of cases, what I have seen is this. They say, for instance, Bharat, a stock like Haikal Chemical, you will see that it has Bharat Forge, Haikal Chemical, these companies, they belong to the same group. What what has happened is that these companies have invested, they are actually continuously investing, continuously doing capex, and the free cash flow generation is not happening that way. So if that happens, market actually doesn't give much of a greater multiple to that, because according to Mr. Buffett, that it is the free cash flow that is the most important thing. So you look at the fundamental performance over a period of 10 years or so, and then you will find a lot of surprises there, which I mean, these quarterly earnings do not mean much for a long-term investor. They are definitely there. And another thing is that I have very high respect, very, very high respect for Sajal, because his understanding of this pharmaceutical research and the developments of technology, pharmaceutical technology and whatever. I mean, this is his area. He understands things much better. But still, I would say that sometimes what happens, that actually a lot of price growth has already happened in a number of pharmaceutical stocks, and they may move into a consolidation before moving up again. That's my point. I think that I have given a very long answer. जी Thank you, sir. सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को मार्केट के संबंध में बताया है। तो मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो करंट सिनेरियो, जैसे अभी रिसेंटली हमारा क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन लगभग खत्म हो रहा है और काफी कंपनियों के रिजल्ट आ भी चुके हैं, तो सर इन रिजल्ट के बाद और जो इन्फ्लेशन के डाटा हम लोगों ने देखे हैं, तो इनको देखते हुए आप आगे के 1-2 महीने 3 महीने के लिए कुछ हम लोगों को मार्केट के आउटलुक के संबंध में बताने का कष्ट करें सर। See, I would say that actually the fundamental performance is pretty good. My take is that a number of companies have actually posted quite a good fundamental performance, and that's why you have seen this rally. This rally has proved itself to be a very durable rally, in the sense that earlier rallies after October 2021, there had been 24 days, 29 days, 30 days kind of upswing that used to happen, and this time it has run for 63 calendar days. This shows that it has got it has got some backing of the earnings, some backing of fundamentals that is there. But if you ask me, that when I look at the interest rate scenario, although maybe there will be a pause in interest rate hikes at some point in time, but if you have noted, I mean, this was the last monetary policy. When it was announced, the governor said that we are very focused on bringing down inflation, and inflation bringing down means he is initially planning it to take it to down to 5% and then bring it down to 4%. That is the mean. That the band is 2% to 6%, but they want to come back to the mean of 4%. And also he said that
the board, that is the MPC, is very much clear about one thing, that no more accommodation. The accommodation, that what is accommodation? Accommodation is nothing but monetary easing. That means they will actually take back when they bought bonds. Quantitative easing is actually central banks uh, uh, they inflate their balance sheet by buying bonds, and quantitative tightening QT is those bonds that they purchased, they are now actually selling. If they sell bonds, what do they take? They take rupees, they take dollars. That is, the money goes back to the central bank, and central bank is not any other bank. If money goes back to it, that means that money is out of circulation now. So if that happens, actually money is the true fuel of any bull market. If that is not forthcoming in the way it had been between 2020 and 2021, I don't think you will see a durable upswing. It has come up fine, but you never know when the selling might happen again. My take is that do not expect immediately a very huge upswing. And one more thing that I learned from a seasoned technical analyst in Kolkata, I used to have this rookie's notion that once the earlier high is taken out, we would say that the bull market is back. I learned it from him. He is an Elliottician. He said that unless you see at least a 25%, 25% means the fall from 18604 to 15183. You have, if that is 100%, you add 25% more, it will come to something like 19,500 or so. Then only you can say that the long-term bull market has resumed. Otherwise, it can actually trap you. I'm not saying that immediately it's going to fall or something. That's not the point. Point is this, that look at the big bull. No, I'm not talking about the departed soul of Rakesh Junjunwala, our big bull. I'm talking about the big bull in the form of the central banks. If they are not playing ball with you, I mean the bulls, I mean the investors, then expect a lot of correction. And please, for God's sake, do not pay high PEs. Do not pay high PEs, because once the monetary tightening starts in a real impactful way, then what will happen is that you will see that the companies will continue to post good sales and good earnings, but there will be PE compression, there will be a kind of sideways markets. Look at it this way, the price is not falling, the earnings is rising. What is happening? That means they are moving, the stock price is moving sideways. Now with the your denominator, that is your earnings, that is increasing, that will compress the PE, but that is not actually pushing the price up. That might happen. जी सर, तो थैंक यू सर। सर मैं एक आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने फंडामेंटल्स के संबंध में कुछ बुक्स बताई हैं, तो सर कुछ टेक्निकल, क्योंकि आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के स्टडी करते हैं, जैसा आपने अभी स्वयं बताया, और हमने पहले भी आपके बहुत सारे शोज में इन चीजों को देखा है। तो सर टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आदमी जो बेसिक लर्निंग कर रहा है, तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, उसके लिए कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो अपने जर्नी को आसानी से आगे बढ़ा सकता है सर? देखिए, अगर टेक्निकल सबको सीखना है तो मैं बोलूंगा कि आप एडवर्ड्स एंड मैगी जो भी एडिशन मिलता है वो खरीदिए, और रॉबर्ट रिया बोल के अनदर राइटर है जिसका एक किताब आपका ये स्टार्लिंग बुक शॉप इन बॉम्बे एंड अदर प्लेसेस, आई थिंक ऑन Amazon it is also available, that is it's simply it is known as Dow Theory by Robert Ria. But what you will get to read in that book is you will understand why the swings happen, and you will also get Charles Dow's own writings there. That is, reading that is very important. But those who are not willing to read such things,
I would say that you read Edwards and Maggie, and then acquire two other books. Martin Pring's Technical Analysis Explained. The book name of the book is Technical Analysis Explained, and John Murphy, Technical Analysis of Financial Markets. These are the basic books of technical analysis. This is uh, after that you can actually read Market Momentum by Martin Pring to know the oscillators, like that. There will be many books then, but these are the fundamental texts of technical analysis that you should be reading. But I would suggest that you read Robert Rhea. You will get a very good understanding of markets, because Charles Dow's writings are actually given there, and Robert Rhea's commentary as to what is a bull market, what is a correction, why it is a correction, how do the corrections happen, all these are explained. You will have a better understanding of the market movements that way. Yeah, fact finder, you have raised your hand quite a while. You can ask your question, please. Thanks a lot, Rajat. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So I was one comment and one question. I think what's it? One comment was you mentioned that this rally has been driven by good results, but when I look at the estimates by analysts for FY23 and FY24, almost most sectors, and I'm looking at the MSCI India sector wise, there's been an earnings cut. In fact, I shared a photograph with you just now on my Twitter handle, and it shows that where there have been about a 3 or 4% earnings cut in the last 3 months, and in the last 1 month has also been an earnings cut, which is reflective of the results. And so, I mean, so to that extent, typically, if you do have some sort of a rally that is based on earnings upgrades, then I'd understand that. But here you actually have earnings downgrades. So See, that's this, okay, sorry, you carry on. Let me first hear you. So you go ahead. You can share your thoughts on this. And What I would like to say is this, that here the index, not only the Nifty, but also the Bank Nifty as well as CNX Mid Cap. CNX Mid Cap, in fact, has performed the best among the three. They have performed on the basis of the current results. I mean, I'm not saying that this rally is on the basis of earnings upgrade going forward. In fact, if you ask me, I've already made my disclosure that I've sold a large, not large, but significant percentage of my portfolio. I'm in cash to that extent, because of this, that I am looking at this rally as, many people would not like it. It's a suckers rally. It's a suckers rally kind of a thing. What is likely to happen is that I'm expecting that this rally, even if it were to cross 18,604, I would not be convinced that we're going to get into a bull market once again. In fact, 2023 could be a much worse experience going forward, because now at least there are certain blips somewhere, and some companies have at least posted some good results, but that is not going to happen, and there will be squeeze on a lot of sectors. Like pharma may not move, IT, actually you have seen that I suppose IT would also suffer, because whenever I look at the fundamentals from an accounting numbers point of view, I haven't seen much, even after the June results. I haven't seen much to really be very jovial about. My point is this, that earnings going forward might suffer, primarily because there is demand compression, and also because there will be this quantitative tightening. I do not believe that the central banks are going to stop raising interest rates. They may pause, but they will be forced, because see, when you see that
1 year back or maybe 14 months back, I saw chicken Maggie uh, for 70 grams packet. It was 12 rupees. Then this year, early part of this year, it was 15 rupees, and Nestle started giving two free for every 6 bought in a pack. And now, no freebies, 18 rupees per pack. Can you believe it? And if you ask your household people who are actually mindful of the household expenses, they will tell you that their, the purchases that they make on a regular basis, on an average, it is more than 10% increase. So why am I referring to this? Because I fear inflationary expectations to be a much more lethal thing rather than inflation itself. In the people's mind, if they are convinced that inflation is not going to go down, then there will be wage price pressure. Then there will be further hikes in demand, in further hikes of salaries, etc. At the same time, if there is supply compression, supply chain problems, they continue, prices will automatically go up, whether we like it or we don't like it. So earnings downgrade is an economic possibility. I also agree, and I'm not looking at. That's the reason why my broker is asking that you why aren't you the market is going up, you have sold, you are not entering. The simple reason is I'm not convinced. That's the thing. Thanks a lot, Rajat. And by the way, since you mentioned about Nestle, I had in fact, just today put out a tweet comparing the McDonald's Aloo Tikki burger. I was surprised that between 2000 in the last couple of years, the price has gone up by almost 45%. That's a lot, between pre-COVID and today. My second question is on since you look at global markets and you look at things globally from a global perspective, do you think there is a case for Indian retail investors now that things are very tech savvy and easy? Do you think there's a case for Indian retail investors to rather invest money abroad, like in the US markets, where the market is a lot more, valuation friendly, and the market also is, and you said, it makes more sense to invest in an ETF. So from that perspective, one is the US markets are more valuation friendly. Secondly, it's a much more uh, innovative country simply because that's the way the entire ecosystem exists out there. What are your thoughts on that? But if you are, I would say that I know that you can actually invest in US market. Some people can directly do it. For the rest of us, we have to go through mutual funds, and a lot of people I know who have actually done SIPs and those funds that are investing in US market and other markets also. But personally, I would say that I don't get to study those companies directly, and I'm not. So I would prefer to invest here rather than there. And another thing is that uh, if you are if you want to buy US stocks, I would suggest that you buy Google. You buy Amazon, you buy Apple. These stocks, when they offer you real good price, that is, if there would be any decline, and you get into that at a really attractive price, that will give you some degree of margin of safety. Of course, not like Benjamin Graham's kind of thing. That is not possible these days, but at least some margin of safety, yes. And otherwise, you have to do one thing. You have to have the capabilities like Sajal. And only if you understand an industry in so much depth, then you can actually venture out and get into some foreign stocks in that particular industry. See, what I like about him, I don't know whether he's there or not, but what I like about him is that he focuses on primarily pharmaceuticals. A man cannot be an expert like most of us TV commentators. We are experts on everything.
Of course, that is possible from a technical point of view, but how is it possible from a fundamental point of view? I've never been able to understand. But he is one person for whom I have very high regards. If you can develop that kind of knowledge, then go for such companies globally. That is fine. But otherwise, as a basket case, I don't think that US stock market will give as much growth that India would going forward. In fact, US is likely to suffer more. So, Prateek, you can ask, yeah. रजत सर, फर्स्टली तो आई एम बिग फैन ऑफ यू सर. मेरे को एक एक्सपीरियंस याद है. आप 8-9 मंथ पहले टीवी में जी बिजनेस पे एक शो पे आए थे. देन आपने निफ्टी पे क्रॉस ओवर एक्सप्लेन करा था. वो रियली मेरे लिए बहुत वर्क करा था, स्टॉक्स में भी और निफ्टी में भी. आपने जी बिजनेस पे अनिल सर के साथ एक शेयर करा था, एक टेक्निकल एनालिसिस वाला. और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो शेयर जिनमें फ्री फ्लोट कम है, उनके रिगार्डिंग हम उनको पी से कैसे कंपेयर, मतलब उनकी पी जनरली ज्यादा होती है, तो उसमें अपन कैसे पी लॉन्गर टर्म में पी को जज करें कि वो और वैल्यूड है या नहीं है? See, basically the whole idea of free float, say, at one point of time, you look at stocks like Nestle, you look at stocks like DMart. These stocks, their free float is so low. I mean, so low meaning it is less than even 1%. So what happens here? You cannot get a proper PE because there is so much demand for that stock, but the free float is not there so that people can buy. Then when you bid it, you have to go for higher bids, and that will raise the PE because the supply, there is an artificial scarcity, that is adequate free float is not available. This is tactics to actually maintain prices at a very high level. But the problem is that sometimes these stocks go for a tailspin for the same reason, that since the free float is so low, that if somebody were to book profits in a large chunk of stocks, with a large chunk of stocks they have, then the stock may actually suffer. And this is when there is very little free float available, the PE could be misleading. PE could be misleading. Had there been good amount of supply available, look at, and one more thing you can actually track. Always track how much percentage of stocks retailers are holding in a particular counter. If the retailers are holding a lot of stocks, that stock is unlikely to move up. Whereas where retail investors are not much there, then you will not find that they are those stocks actually they perform pretty well. You have seen one thing, when ITC was 130 and when ITC is 270, in between that, huge chunk of retail players have actually sold off their ITC holdings. Who bought? Those who are in the know of things, the institutions, they bought ITC, but ITC was malign, mocked, all that. When ITC should have been lapped up, that time that on the media you have seen people, even some anchors I know who actually used to comment, today ITC bhi chal diya, kind of thing. So ITC has good free floats, but in case of Nestle, in case of Whirlpool, in case of a lot of other stocks, there is always try and find out what is the actual free float, how much percentage of stocks are really circulating in the market. You will find DMart. I used to get totally surprised by its movement, but you look at what kind of percentage of stocks available in the market for purchases, you try to bid it. And then there is one more problem that happens in case of stocks of these kind. What is that? If these are stocks where even if some of them might be available in futures also, F&O, because their free float is so poor,
you try to short them, you will be trapped like crazy. You will be trapped like crazy. So people, after they have burned their fingers, they will not sell on the basis of valuation because they know that they will get trapped. They know that they will get trapped. And when you have the backing of the central bank, that the bulls are getting so much money sloshing in the system, then short sellers beware. That's the point. Okay, sir. Thank Thank you. you, Pratik. So, Rajat sir, I have heard you often like you are a proponent of bottoms up approach. So, what is your screening criteria like? If we ask you how you select a counter, so that would be very helpful for the attendees. And on the top of that, 2 or 3 investable spaces which you find lucrative 3-5 years down the line. I would say that, see, personally, I would look at the first thing I would look at when I look at a company, I would always look at what kind of multiples you are offering me. Of course, that I would go later. But whether I'm able to understand the company's business, you know, I just to give you an example. Uh, Tech companies, pharmaceutical companies, advanced technology-based companies, they are in nutraceuticals, they are in some other places. Actually, I do not have much competence there. So I really do not venture out to those companies unless, of course, like for instance, for pharmaceutical companies, I read Sajal's posts, and if he says that this company is really good or something, then I look at it and I try and understand what is happening there. Unless I can comprehend what is the company's business from two aspects. That is, say some of the stocks. See, I've read a book called 100 Baggers, and that if you read it in an advanced market like US, the companies whose products and services you use on a daily basis, those kind of companies, even in advanced market like US, also produce 100 baggers in 3 decades. In 3 decades, 100 baggers. So in 1 decade, maybe they will be, they might be a 10 bagger or say 5 bagger. I would be pretty happy with that if I can find and I am willing to wait. And the point is that for why I'm looking at companies that have stable earnings, because I would be able to sort of come up with a valuation, whatever valuation parameters you use, whatever valuation model you use, but where, say, a startup, unless I know the startup, unless I really have a great idea, I mean, very good idea about the industry, where the startup is operating and what kind of prospects that are waiting for them, I really would not venture into that because I am not being able to foresee the future. If I can't comprehend as to how things are going to pan out, I'm, I won't really invest. And my point is that now we are entering into a phase where there will be a lot of volatility. Volatility happens when you know that earnings will not be there as much, but there will be number of noises. I mean, you will get to hear a lot of noise about companies, about sectors. Why do the noise comes? Noise actually comes when the real fundamental is actually the real fundamental, and it can be stated in a very succinct manner, that is possible. But when you sell, say, I'll give you an example. When Reliance Power came for the IPO, he said, "Power on to masti on." What does it mean? That yes, any party would require electricity, otherwise the party is doomed. But that is not the criteria to buy a stock or sell a particular issue. But when you actually create that kind of noise, it's actually not telling you anything. It is noise. Most of the time, you get to hear lots of noises just to justify. And see, these justifications in the short terms, they actually do not give you a clue. I, for one, would be looking at stable earnings going forward, where I can understand the business. Like, for instance, I have openly mentioned that I hold ITC in my portfolio. That's the largest chunk. Apart from that,
I'm betting on a stock which, of course, is not very much in favor at the moment. That is Bajaj Auto. Going forward, I believe Bajaj Auto will do well. Immediately, I'm not looking at any earnings expansion out there. But over a period of time, because Bajaj Auto has got the best electric scooter, in my opinion, I've studied a number of them, but why I choose this, because I'm pushing 60. I require stocks where there would be good amount of dividends also, and there is a reasonable prospect of further upswing. That kind of stocks I'm looking at. And any there are lots of stocks that are at the bottom, like for instance IEX or say IRCTC. IRCTC, maybe it has got great potential, but I would not be investing in them so long as government is a part owner of IRCTC, uh, because when and what they will do, I really don't know. But you market will throw you a lot of opportunities. If you ask me, are there many stocks that you can buy at the moment? I would say no. In June maybe there was, but not so much. So, and I don't want to take many names, but the sectors, again, you will see this is a time when value investing, which had not been performing for the last 2 decades, go for value. They will perform when things are tough. Value stocks will perform, not the flashy ones. Sorry. थैंक यू सर, आपने हम लोगों को अपने व्यस्त समय में निकाल कर इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको शार्ट में हर चीज बता दी है। अब मैं समझता हूँ कि आपके आज के उद्बोधन से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन लोगों को अपने भावी निर्णय लेने में काफी सहायता मिलेगी। तो सर, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सर ने अभी रिसेंटली अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, जिस पर उन्होंने हर तरह से टेक्निकल भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, फंडामेंटल को भी कैसे देखा जाए उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। तो हमने तो उसको फॉलो भी किया है। तो आप सभी लोग भी उसके माध्यम से भी सर से जुड़ सकते हैं। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर 1 घंटे का समय उन्होंने हमको देने का वादा किया था। तो लगभग 1 घंटा हो गया है। तो सर, अगर अभी कुछ समय हो तो अगर आप रहें तो रह सकते हो तो उचित है, अन्यथा फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। फैक्ट फाइंडर जी, सर कुछ आपसे पूछा? क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए जाना है, तो जी सर, जी सर, इसीलिए हम आप लोगों से विदा मांगता हूँ। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी very मच, small बहुत धन्यवाद request, सर like आपका। Rajat sir, I have a very small request. Like when you make next video, or maybe anytime you find time, kindly include the portion you discussed about the economy before the World War and after the World War, where we can study that stuff. That would be really helpful for all of us. And guys, those who are our attendees, I would like to tell the YouTube channel has videos in 3 languages, Hindi, English and Bengali. So you can be comfortable with any language. You can resort to that also. Thank you, Rajat sir. Thank you so much for थैंक यू सर, थैंक यू for promoting my YouTube channel. नो I'm सर, so happy. ये सर आपका यूट्यूब चैनल हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये लोगों को जानकारी मिल जाएगी सर, तो उनका आगे के लिए ज्ञान बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। जैसे भी प्रतीक ने बताया सर कि एक दिन उसने देखा आपको टीवी पर और उसका कितना लाभ मिला। तो सर, ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और आप जैसे मतलब बहुत ही कम एनालिस्ट हैं जो कि बहुत ही टू दी पॉइंट और फंडामेंटल और टेक्निकल को मिला करके अपनी बात को रखते हैं सर। सर, ये फैक्ट फाइंडर सर, शायद कोई छोटी सी इनकी क्वेरी अगर हो तो आप प्लीज इनको अटेंड एक बार इनकी सुन लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेरी पूछने दीजिए उनको। Thanks, Rajat. Rajat, recently, was it Warren Buffett, has actually taken approval to buy 50% of some oil companies. And if you look at the last couple of quarters, he's actually added very significantly to the oil sector. What is your thoughts on, have you done some on energy and oil in specific? Any thoughts on that? Because even within if you look at the stocks within India also, the valuations seem pretty reasonable.
Well, I have always felt that the production and exploration companies should be doing well, and among that, of course, one would have mentioned ONGC. But the problem with, again, I tell you one thing. I actually avoid. I used to invest in PSU stocks also, but then I never know that when ONGC was a very sound, fundamentally very sound company, but these days the kind of dividends, the kind of money they have transferred to their largest, transferred to the shareholders in the form of dividends, and government benefited out of it. So I don't like to invest in companies which are there in still in the public sector. But other than that, production and exploration companies, they might again do well. So oil may initially go down because oil chart is suggesting that there could be further fall here. Actually, that is going to be a cushion for the world equity markets also. But going forward, see, I read in a magazine, I don't remember the name, in some of its past issues, that they were estimating that even in 2030, we will still be fossil fuel based, percentage will be something around 66 to 70%, and 30% may come from renewable energy or something like that. So oil is not just going to go away. Oil we would be needing anyhow. So as I said, I would not mention any name, but search for companies that are in exploration, production, those companies. And one more, just one good clue I will tell you. When you are looking at mining, mineral, and companies of this kind, follow those astute investors. I take it that Mr. Anil Agarwal, the promoter of Vedanta, he is an astute investor. If you read international magazines and all, then you will find that he actually aligns with the buyers of companies. See, when did he actually increase stake in number of mining and mineral companies? That was when the year, that is the calendar year, ends with 890. That means 2018, 19, 20. It is not Mr. Agarwal's find, or it is not my finding or something. Reserve Bank of Australia did a study, and it was found that early part of the time, this mining, mineral, oil, all these companies tend to do very well, and they become very attractive for long-term buyers, especially those who want to buy mines and things outright. That happens around the years that ends with 890, and this has been repeated in 97, 98, 99, 2000, 97 also. This has happened in the next 2 decades also. That is, but the interest that Warren Buffett has evinced in oil companies, or say even similar companies, he might go, because if you track the the investing activity, not financial investing, I'm saying real investing activity, that is new mine exploration, new mining happening and all that, those kind of things after 2011, or rather even 2008 or so, that has not happened much. So given that, that space will attract a lot of interest. This is what I have gathered from reading foreign journals and all. And and I have also given you a clue that this space is studied in detail by certain central banks also, like Reserve Bank of Australia. And oil stocks, oil will rebound, but before that there will be a crash. There will not a crash, there will be further downswing, and people will be thinking that oil prices are again sort of
mellowing down and all that, but that is not going to be a durable thing. There will be another rise in oil prices going forward. थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार मैं फिर से सर सभी अपने लिसनर की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कभी हम लोगों को समय आप दे देंगे महीने में 1-2 बार, तो हम लोग आपके अनुग्रहित रहेंगे। तो जब भी आप स्पेयर होंगे मैं सर आपको इनवाइट करूंगा, सो दैट कि आपसे सामने सीधे हम लोगों की बात हो सके, और आपके यूट्यूब के माध्यम से तो हम लोग आपके विचारों को जानते ही रहेंगे। थैंक यू। प्रतीक, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, थैंक यू सर। सर वो मेरे को बस ये बोलना था सर, आपके पास जब भी टाइम हो पी के रिगार्डिंग एक यूट्यूब पे वीडियो, ये जो हाँ, जिनका जरूर। फ्री फ्लोट कम होता है ना उनके लिए। ठीक है, सर, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ And I सर। can see that Sajal is here. My best regards to him. I look upon him for anything pharmaceutical. I mean, amazing knowledge, and I have learned a lot interacting with him and through his posts. I mean, my tributes to him. Thank you, sir. And Rajat sir, if your DM will be open for me, so in case when we have Sajal sir next time, I will notify you through that. So Sure, otherwise, sure, I will. sure. Yeah. Thank you, sir. Thank you for your time, and would surely like to know your insights in future also. So thank you for your time, sir. Most welcome. It was really my pleasure to attend your Twitter space. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Bye bye. बाय बाय सर, बाय बाय सर, गुड नाइट, गुड इवनिंग। So thanks everyone, and there are permanent bears, there are permanent bulls, but there is one category permanent participants. So I would encourage each one of you to be a permanent participant. Try to learn the nuances of market from different experts. Do your own study, and any names taken during the conversation were purely for educational purposes. Please don't consider any kind of buy sell recommendation. So those who are attending our spaces, they know we are not here for any buy sell recommendation or sell anything. It's a podium where we try to bring expert to share their decadal experience with all of us. We learn together, and that is the only intention, educational purposes. Thank you very much. Thank you, Vajpayee ji, for convincing sir and hosting such a wonderful space, and Prateek, Mohinder, and everyone who participated, and Sajal sir also. So thank you so much, everyone. Vajpayee ji, we can wrap it up. ओके ओके, थैंक यू भाई सभी लोगों को, प्रतीक जी, मोहिंदर जी, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अब हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग कहते हुए Sir, also this space was recorded, so जो लोग time से नहीं जुड़ पाए हैं, तो they can also revisit these spaces and listen to the insights shared by sir. Thank you. जी, ओके ओके, थैंक यू। प्रतीक जी, आपको कुछ अगर ऐड करना हो या मोहिंदर जी, तो अन्यथा फिर हम लोग कंक्लूड कर दें। नहीं सर, ऐसा कुछ ऐड नहीं करना। मैं तो बस ये बोल रहा था कि रजत सर को मतलब टीवी में बहुत सारे एनालिसिस वाले लोग आते हैं, बट रजत सर का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, कोई भी ट्रेड देंगे, चाहे फंडामेंटल है चाहे टेक्निकल, उसके पीछे का पूरा लॉजिक उन्होंने बताया हमेशा टीवी में। तो मैं बहुत कुछ उनसे उस सीखने को मिलता है। जी जी, ठीक है। फिर सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं एक बार फिर से पुनः मिलेंगे इसी स्पेस में, लेकिन कुछ समय के बाद। थैंक यू। थैंक यू वाजपेयी जी। थैंक यू। ओके।